welcome to our channel Study Extraordinary. In the previous video, we had discussed the word problems based on number system, and now we are coming to the next step. In a bunch of upcoming videos, we'll discuss the various type of numbers. We'll start with the basic natural numbers and whole numbers, and then we'll proceed towards fractions and rational numbers. And with that, we'll also include some very small yet important topics like factors and multiples and simplification. So now, if you haven't subscribed to this channel, then subscribe to it because a whole series is going to start soon. So let's get started. Today, we'll understand what are natural numbers, what are whole numbers, the various operations and properties that can be performed over them. So let's start with the natural numbers. What are natural numbers? A natural number is a set of counting numbers. That means the numbers that are used for counting, like 1, 2, 3, 4. All these numbers are known as natural numbers, and due to the reason that they are being used in counting, they are also known as counting numbers. Okay? So now we come to our second category, that is the whole numbers. The whole numbers are very similar to natural numbers. There's just one difference in both of them. That is, in whole numbers, we include a 0, while all the remaining numbers remain the same. This means that the whole numbers will start from 0. That is 0, 1, 2, 3 and so on. While the natural numbers will start from 1. That is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay? So from this we can conclude one statement, that is, all natural numbers are whole numbers. 1, 2, 3, 5, 8, anything is a whole number. But all whole numbers are not natural numbers, because we have 0 and 0 is not a natural number. This is to be kept in mind. Now coming to very important 2 points that are to be remembered in this chapter, that is successor and predecessor. Now coming to the 2 new terms that we are going to study in this chapter. The first one is predecessor and the second one is successor. Predecessor of any number is a number that comes just before the given number. That means if you are given a number 23, so what will come just before this? 22. Okay? This means that predecessor is a number minus 1. That means if you subtract 1 from 23, then you will get 22. So let's suppose there is any number m. M minus 1 is equal to your predecessor. Okay? And one more important point that is to be remembered is that 0 does not have a predecessor in whole number system. Keep this in mind, in whole number system. Of course, we'll study in the upcoming videos different number groups like the integers, in which we'll have a predecessor for 0. But up till now, what we know is that in whole numbers, there is no predecessor to 0. Okay? Now coming to successor. Successor is completely opposite to that of predecessor. Successor is simply like what you have studied in your history. आपने किंग्स पढ़े होंगे ना, एक किंग ABC होता है, या कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ABC ले रही हूँ. ओके, सो एक ABC किंग है, उसका सक्सेसर, उसकी डायनेस्टी हम पढ़ते हैं कि उसका बेटा ये था XYZ, देन उसका एक और बेटा था PQR. तो ये जो XYZ PQR है, ये सक्सेसर्स हैं उस डायनेस्टी के या उस किंगडम के. So basically successor is the one that comes just after a given number. So here you will have a number 25. So the successor to 25 will be the number next to it. That means you will add 1 to that number. That means 26. Similarly, you can say that the successor to 0 is always there. Okay, so the successor of 0 will be 0 plus 1, that is 1. Coming to the operations on whole numbers, we basically know there are 4 main operations, that is addition, subtraction, multiplication and division. And these 4 are very simple
I hope आप लोगों को ये आते होंगे. We'll discuss some very basic questions in the upcoming videos and then we'll move on to the advanced questions on these type of operations. So now coming to the properties of each operation, and this is something new, so please ध्यान से समझना. The first one, the closure property. The closure property states that if we have any two numbers a and b can be any whole number, that means 0, 1, 5, 20, 50, 30, anything. Two numbers are there and they are whole numbers, and then we perform an addition operation, that means we add these two numbers and we get a third number c. Then this c should always belong in whole numbers. इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी दो नंबर्स लिए हैं, सपोज 3 लिया है हमने और एक 7 लिया है, ठीक है, और हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करा है. 3 और 7 हमारे होल नंबर्स हैं, हमने इनको ऐड करा, व्हाट वी गेट 10. तो हमारा जो 10 है ना, दिस इज ऑल्सो होल नंबर एंड दिस इज फिक्स्ड, हमेशा ऐसे ही होगा. सो दिस प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. This property states that there are two numbers a and b and we perform an addition operation. That means a plus b हमने perform करा, then we save the result, then we perform b plus a. So this b plus a and a plus b will give the same answer. मतलब हमने दो numbers लिए, example लेते हैं, थोड़ा आपको समझ आएगा because all these notation things are a bit typical to understand, so examples will make it very clear. We'll take two numbers, let a be 5 and b be 10. Okay, these two are whole numbers. We perform an operation a plus b, that means 5 plus 10 is 15. Then we perform b plus a, 10 plus 5, this is also 15. So what we can see is कि दोनों का आंसर सेम आएगा. आप a प्लस बी परफॉर्म करो, b प्लस ए परफॉर्म करो, द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम. Additive property. This is a very interesting property. Additive property is similar to additive identity. 0 is the additive identity for any number. Additive identity का मतलब क्या होता है? Additive identity मतलब same. Additive मतलब add करके. तो कोई ऐसा नंबर जिसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं और मेरा आंसर नंबर इटसेल्फ आ जाए, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पे हमारा 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी. आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें आप 0 ऐड करो. सपोज मैंने ले लिया 31, उसमें 0 ऐड करा, क्या मिलेगा मुझे? 31. 48 प्लस 0 48. सो द एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव प्रॉपर्टी states that 0 is the identity of anything and whatever you add to 0, that means the answer will be that number. और इसको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, ये तो हमने देख ही लिया था पिछली बार अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. ओके, द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, it is associative property. This is this property which means that you group the numbers in any way. आप कैसे भी ग्रुप कर लो 3 नंबर्स को, चाहे आप a प्लस बी को पहले ऐड कर लो फिर उसमें c ऐड करो, चाहे आप b प्लस c को पहले ऐड करो फिर उसमें a ऐड करो, या इसमें एक और वेरिएंट भी बन सकता है कि हमने a प्लस c को पहले ऐड कर लिया और फिर b ऐड करा. आप इन तीनों में से कुछ भी पहले आगे पीछे करके ऐड कर लो, द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज a is 5, b is 3 and c is 2. Okay, we have to add this. तो सबसे पहले हम a प्लस b को पहले ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 8 and then you add 2, this will be 10. Fine. Now the second thing, let's add b plus c first. So b plus c को ऐड करके आपका आएगा 5 and 5 plus 5 will give you 10 again. And the third one, a plus c, that means 5 plus 2, that is 7 and then you add 3 to it, it will be 10. तो आपने देखा कि आप कैसे भी ऑर्डर में इसको अरेंज करो, ग्रुपिंग करके अरेंज करो, चाहे आप कैसे भी ऐड करो, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम. हम इन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज के लिए क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे,
तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके? अब नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. Coming to the properties of subtraction, the first property states that subtraction of two numbers a and b can only be possible in two cases. That is, when a is greater than b or a is equal to b, but not in the case when a is less than b. And this property is again hashtag for whole numbers. इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होल नंबर्स में तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारा पहला नंबर, यानी जिस नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए देन द सेकेंड नंबर. दैट मीन्स जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, या फिर उसके इक्वल हो, क्योंकि जीरो हमारा डिफाइंड होता है इसमें, ओके? बट अगर हमारा पहला नंबर छोटा है, जो हमारा नंबर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उससे, तो सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ओके? इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी कैन सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8. 8 minus 8 can be done. We can subtract 7 minus 5 because 5 is smaller than 7. But we cannot subtract 2 minus 3. ये ऑपरेशन हमारा रिजल्ट करेगा एक नॉट डिफाइंड वैल्यू में, और इंटीजर्स में इस वैल्यू को हम -1 कह सकते हैं. बट आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इंटीजर्स का हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें आपके सारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके? नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b द कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड. ओके, तो अभी हमने एडिशन में पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमने a प्लस बी को ऐड करा है, देन वो a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a. मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर. बट सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है. सब्ट्रैक्शन में ये चीज डिफाइंड ही नहीं होगी. आप एग्जाम्पल लेके देखो. सपोज योर a इज 5 एंड योर b इज 8. पहली बात तो यही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको 15 कर दिया. a is 15 and b is 8. Now 15 minus 8 will not be equal to 8 minus 15, क्योंकि यहाँ पे जो 8 minus 15 वैल्यू है ये होल नंबर्स में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन. फॉर एनी होल नंबर a, 0 minus a is not defined in whole numbers. ये सारी प्रॉपर्टीज मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, होल नंबर्स के लिए, सिर्फ होल नंबर्स पे वर्क करती है ये. तो 0 minus a डिफाइन नहीं होगा, मतलब 0 minus 8 नहीं हो सकता, 0 minus 7 नहीं हो सकता. ये सब हमारे होल नंबर्स में डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये 8, 7, 6, 5 व्हाटएवर नंबर यू टेक, ये सब 0 से बड़े हैं और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को वायलेट करते हैं. द फोर्थ प्रॉपर्टी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन. मतलब अब जो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ग्रुपिंग करके, वो भी सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होगी. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस एज वेल. वी टेक a as 8, b as 4 and c as 2. Okay, so now let's perform the LHS part. 8 minus 4 grouped and minus 2. What will be your answer? 4 minus 2, 2. Fine. Now coming to this RHS, that is 8 minus in the group. So 8 minus bracket में क्या है? 4 minus 2. 4 minus 2 will be 2 and the answer will be 6. Clearly 2 can never be equal to 6. So this property also does not hold for the subtraction in whole numbers. But the last one is a very interesting property. This is basically a relation that you can use in your questions. It means that if a minus b gives you a value c, then this whole can be rearranged as b plus c equals to a. This means कि आपने इसको स्मॉल नंबर हमने ले रखा है यहाँ पे, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया था. ए हमारा है लार्ज नंबर और ये जो आ रहा है हमारा डिफरेंस आ रहा है. तो ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह हो गया जो हमने पहले डिस्कस करा है वर्ड प्रॉब्लम्स में. तो हमारा स्मॉल नंबर और डिफरेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें लार्जर नंबर यहाँ पे मिल जाएगा.
This is this property, and this is very interesting. You can use it at places, in word problems, in questions, and we'll use it further as well. Okay. Now coming to the properties of multiplication. We have 7 properties in multiplication, and the properties of multiplication are the most important amongst all. Okay. So the first property is very similar to addition, that is the closure property. The closure property, as I had earlier told you in addition, means that if there are two numbers A and B and you have to multiply them and you get an answer C, and A and B are told that they belong in whole numbers, then C will surely belong in whole numbers as well. Let's take an example. Suppose we have A equal to 2 and B equal to 5. So A into B will be 10, and 2 is also a whole number, 5 is also a whole number, and 10 is also a whole number. Okay. The next property, that is the commutative property. Again, very similar to addition. The order of the numbers in which they are being multiplied does not matter. You can see A into B will always be equal to B into A. That means 5 into 2 will always be equal to 2 into 5. Okay. Now an interesting property. Like I told you, the multiplicative identity property, we'll see 2 properties in multiplication. In addition, we had only one. That is the additive property, which means 0 could be added to any number and it will give the number itself. Here that property is being satisfied by 1. Whatever you multiply with 1, the answer will be the number itself. This means 1 is the multiplicative identity. Again, identity I had told you, multiplicative identity means कि आप कुछ भी multiply करो, identity मतलब same चीज repeat होनी चाहिए. तो आप कुछ भी multiply कर लो 1 के साथ, the answer will always be that number. And the multiplicative property of 0, this means आप कुछ भी multiply कर लो 0 के साथ. 0 into 2, 0 into 8, 0 into 5, हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 0. Okay. Now the associative property, very similar again to addition. हमने वहाँ पे example लेके solve भी करा था. यहाँ पे भी आप करके देख सकते हो. Let's take A as 2, B as 3 and C as 4. So 2 into 3 will be your 6 and into 4 will be your 24. Like on LHS you will get 24. For RHS you can solve it again. 2 into, then here in the bracket you will first solve 3 into 4. That means 2 into 12, which is also equal to 24. Okay. Now coming to the most important properties of multiplication. These are the distributive properties. And these properties can be over addition or can be over subtraction. Okay. So for addition, we have this formula. That means a number has to be multiplied by the sum of two numbers. That is B and C. And we can open it and multiply it by first number and then add and then multiply it with the second number. So you can see that this makes your calculation very easy. It can be vice versa as well. This means that you can first be doing this and then you can change it to this way as well. For example, let's take, suppose A is equal to 3, B is equal to 5 and C is equal to 8. Now here, if you do the multiplication by this process, I think it would be difficult to do. So you can go by this method. You can simply multiply. That means 3 into, what is your B? That is 5 plus 3 into 8. और जब आप इनको सॉल्व करके ऐड करोगे तो आपका आंसर काफी इजीली आ जाएगा. Now we can add these values and you will get 39 as your answer. So you can see how easy this property has made your calculations. Okay. Now coming to this property over subtraction. Again, the formula is very similar, only the addition sign has been replaced by the minus sign. Let's take an example.
let A be 3, B is equal to 9 and C is equal to 2. So how will you do this? This can be done as 3 into 9 minus 2. That means 3 into 9 minus 3 into 2. 9 3s will be 27 and minus 6 21. Easy. Now let's come to division. Division perform करना तो हम सबको आता है. But now I am giving you a division algorithm. This algorithm will help you check what you have solved. Is it correct or not? Okay. So इस algorithm में क्या है? हमारा जो dividend होता है यानी कि जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो होता है हमारा A. जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा B यानी डिवाइजर. Q होगा हमारा क्वेश्चन and R is our remainder. तो इस एल्गोरिथम में हमारे को मिलता है एक फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो हम चेक करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट है उसमें अगर हम रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो है वो डिविडेंड के इक्वल आ जाए. और हमारा जो रिमाइंडर होता है ना, ये याद रखना है आपको, हमेशा 0 और जो हमारा डिवाइजर है उसके बीच में ही होना चाहिए. डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल भले ही हो सकता है. तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के डिवीजन करना, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत आए. तो आपको ऐसे लगता है कि इक्वल होगा तो काम हो जाएगा, 0 की इक्वल होगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर डिवाइजर की इक्वल हो गया तो कैसे होगा? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि तब हम 1 अपने क्वेश्चन में ऐड करके डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू का साइन है बॉस, ये नहीं आएगा. ओके, इक्वल टू कैन बी 0 बट कैन नॉट बी इक्वल टू द डिवाइजर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ हमारे डिविडेंड हो गया 555 एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से. ओके, तो कैसे डिवाइड करोगे? आते ही होगा डिवीजन. तो 3 1 जा 3, 25, देन 8 3 जा 24 and then 15, that will be 5 and you get 0 as your remainder. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है 185, डिवाइजर है 3, रिमाइंडर है 0 और डिविडेंड है 555. अब इसमें लगाते हैं हम अपनी एल्गोरिथम. तो RHS ही सॉल्व करना है खाली, LHS तो 555 दे ही रखा है. सो लेट्स डू दिस. 3 into 185 कितना होगा? 15, 1 कैरीड ओवर, 25, 1, 455 और उसमें आपको 555 कैरी ओवर भी तो ऐड करना है ना, एंड देन यू विल ऐड 0. सो योर आंसर विल बी 555 विच इज इक्वल टू द डिविडेंड. ओके, अब डिवीजन में एज सच कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत ही सिंपल 3 प्रॉपर्टीज है हमारी. पहली प्रॉपर्टी ये है कि 0 से आप कोई भी नंबर को डिवाइड करवा लो, आंसर हमेशा आपका 0 ही आना है. 0 डिवाइडेड बाय A B मतलब 2 3 5 8 9 कुछ भी 0. तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो बहुत ही सिंपल है कि 0 जो है हमारे यहाँ नहीं आ सकता, मतलब डिवाइजर की जगह नहीं आ सकता. जहाँ भी ये आएगा ये नॉट डिफाइंड है, पॉसिबल ही नहीं है. द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि चाहे हमारा A और B मतलब हमारे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों होल नंबर्स हो, 0 भी ना हो, लेकिन तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर जो है वो होल नंबर आएगा. यहाँ पे इस नॉट का आपको ध्यान रखना है. तो आपने ये एग्जांपल लेते हैं 5 डिवाइड बाय 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक होल नंबर ही है. ज़रूरी क्या मतलब, यहाँ तो नहीं आएगा होल नंबर, कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस में कि डेसिमल्स क्या होते हैं. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी. अगर हाँ और आपको समझ आया ये वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताना. वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.